Everyone, welcome back to my YouTube channel Aspire Knowledge. Hi, I am Japneet and today I am going to start with a new topic of adjectives. Before starting the topic, do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon for more updates about my channel. What are adjectives? So in this video we are going to study about what are adjectives, what are the kinds of adjectives, and how we can recognize adjectives. Let's start. The word that describes noun और pronoun are called adjectives. जो भी word noun या pronoun के बारे में बताता है, उसको describe करता है, उसे adjective है कहते हैं. और noun क्या होता है? किसी भी person, place, animal, thing के नाम को noun कहते हैं. और pronoun क्या है? जो भी वर्ड नाउन की जगह पर यूज होता है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, कुछ भी, वो प्रोनाउन है. तो इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए किसी वर्ड का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं. दे आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर वर्ड्स. ये ऐसे वर्ड्स हैं, या तो ये डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं उन वर्ड्स को. उनके बारे में एक एक्स्ट्रा कोई बात बताते हैं जिससे उसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी का या नंबर का पता चले. फॉर एग्जाम्पल रेड, टू, फ्यू, न्यू, डजन, एटसेट्रा. तो कुछ ऐसे आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है. Now some examples in which I am going to give you sentences so that you can recognize them through sentences, that what is adjective or how we can use them. I am amazed that she keeps so cheerful. मैं बहुत हैरान हूँ ये देखकर कि वो कैसे इतनी खुश मिजाज, इतनी cheerful रहती है. तो cheerful उसको describe कर रहा है कि वो कैसी है, cheerful है, इसलिए वो adjective हो गया. We argued him out of going on such a dangerous journey. So हमने उसके साथ आर्ग्यू किया कि यहाँ नहीं जाना है, ये बहुत डेंजरस जर्नी है. तो जर्नी कैसी है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो डेंजरस, खतरनाक जर्नी है, उसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी आ सकती है, तो वो डेंजरस जर्नी है. He looked relaxed and elegant and had the patina of success. So वो कैसे लग रही थी? बहुत रिलैक्स्ड और एलिगेंट लग रही थी. So उसके बारे में ये एक फीचर बताया है, वो कैसे लग रहे हैं उसे डिस्क्राइब किया है, रिलैक्स्ड हैं और एलिगेंट. The children here are quite friendly with one another. सो चिल्ड्रन कैसे हैं यहाँ के? बहुत फ्रेंडली है, ये उनका फीचर है, ये उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं चिल्ड्रन को. द एडवर्टाइजमेंट्स डिपिक्ट स्मोकिंग एज ग्लोरियस एंड अट्रैक्टिव. एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं कि स्मोकिंग कितना ग्लोरियस है, अट्रैक्टिव है, कितना अच्छा लग रहा है जब करते हुए दिखाते हैं, बट इन एक्चुअल इट इज़ वेरी डेंजरस. सो ये फीचर बता रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का कि एडवर्टाइजमेंट कैसे हैं स्मोकिंग के, ग्लोरियस और अट्रैक्टिव. He takes a ghoulish delight in reading about horrific murders. So उसे बहुत मज़ा आता है horrific murders, गंदे गंदे murder stories पढ़ने में उसे बहुत मज़ा आता है. horrific मतलब डरावना. Now how can we assume or place that here we should keep an adjective, here we should place an adjective? क्या पोजीशन होनी चाहिए? सो हाउ कैन वी अज्यूम दैट दिस इज द करेक्ट पोजीशन फॉर एडजेक्टिव? लेट्स सी. एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड जनरली बिफोर द नाउन. नाउन से पहले हमेशा उसे प्लेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अ हार्टी क्वीन, कैसी है? बड़े दिल वाली क्वीन है. इन सम केसेस एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन. और कई केसेस में एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद भी आता है. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज बिग, कैसी है? वो बड़ी है.
When several adjectives are attached to one noun, they are sometimes placed after it for emphasize. जब बहुत सारे adjectives लगाए जाते हैं किसी word के लिए तो वो हमेशा उसके बाद में आते हैं ताकि उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़े sentence पर, emphasize हो वो adjective. For example, the farmer is brave and fearless. Went ahead. Farmer कैसा है? बहुत बहादुर है और निडर है, इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया. Now we are going to study the list of adjectives. Abrupt, acidic, adorable, amiable, amused, appealing, appetizing, average, batty, beautiful, blushing, bored, brave, bright, bored, bulky, blurry, charming, cheeky, cheerful, chubby, clean, clear, cloudy, clueless, clumsy, cool, creepy, crooked, cruel, cumbersome, curved, cynical, dangerous, dashing, decayed, deceitful, deep, defeated, defiant, delicious, disturbed, dizzy, drab, drained, dull, eager, aesthetic, elated, elegant, emaciated, embarrassed, enchanting, energetic, enormous, extensive, exuberant, fancy, fantastic, fast, fierce, filthy, flat, floppy, fluttering, foolish, frenetic, fresh, friendly, frightened, frothy, funny, fuzzy, gaudy, gentle, ghastly, giddy, gigantic, glamorous, gleaming, glorious, gorgeous, graceful, greasy, grieving, gritty, grotesque, grubby, grumpy, handsome, happy, healthy, helpful, helpless, high, hollow, homely, hot, horrific, huge. So these are some examples of adjectives which can be used in a sentence to describe anything, person, place, or a pronoun. Some more: hungry, hurt, icy, ideal, intelligent, irritable, itchy, intrigued, irate, jealous, jittery, jolly, joyous, juicy, jumpy, kind, lethal, little, lively, livid, lonely, lovely, lucky, ludic, macho, mute, narrow, nasty, naughty, nervous, nutty, perfect, perplexed, petite, petty, plain, pleasant, poised, pompous, precious, prickly, proud, pungent, punny, quaint, reassured, relieved, repulsive, responsive, ripe, robust, rotten, rotund, rogue, round, salty,
sarcastic, scant, scary, scattered, scrawny, selfish, shaggy, shaky, shallow, sharp, shiny, short, silky, silly, skinny, slimy, slippery, small, straight, sweet, tart, tasty, tiny, tender, tense, terrible, testy, thankful, thick, tight, timely, tricky, trite, uneven, tiny, uptight, vast, vexed, vivid, wacky, weary, zany. So these were the some more adjectives which can be used in forming sentence while you're describing someone. Zealous, happy. Now we are going to discuss about the types of adjectives. Here I am just going to tell you the names of it, the kinds of adjectives, and I will describe each and every adjective in my single another video. So you have to watch all the videos of adjectives to understand each and every type of adjective. First one, adjectives of number. Second, adjectives of quality. Then adjectives of quantity. Then demonstrative adjectives. Then interrogative adjectives. Another one is possessive adjectives, and last one is proper adjectives. So these are the types of adjectives. So how many types of adjectives are there? There are 7 types of adjectives. Now I am just going to describe the order of adjectives, in which order we can describe a person. So there are some adjectives in which order we can describe it. So first one is opinion. How can we describe a person? By giving an opinion on that person, like pretty or horrible. The person, she is pretty, so this is a kind of opinion, and also pretty is an adjective. Another one is the size. The person looks like, size of that person. We can use an adjective according to the size of the person. Age, what is the age of the person, is also an adjective. Shape of the person or place or a thing also is an adjective. Color, anything you describe by color, that color is an adjective. Origin, from where that thing or that person comes. If he is an Indian or she is an Chinese, so that is also an adjective. Another one is the material, the thing by which another thing is made up, so that material is also an adjective. Purpose, purpose of that thing is also an adjective. Thank you everyone for watching this video. I am going to describe all the types of adjectives in individual videos which will be lined up after this, and also I am going to describe the words and tell you the words of order of adjectives in another video. So keep watching and keep following my channel for more updates, and do not forget to subscribe it. And if you think my material is useful for you and some other person, do not forget to share it. Bye bye, take care, stay safe, stay healthy, and stay home.